So let's start with eutrophication. यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल फर्टिलाइजर्स जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉन्ड्स और लेक्स में नाइट्रोजन का कंटेंट नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग रेनफॉल washing of fertilizers causes an increase nitrogen content in ponds and lakes जब पॉन्ड्स और लेक्स में नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो एल्गे और फंगाई की एक्सेसिव ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सेसिव growth of algae and fungi takes place onto the surface of water. ठीक है, अब जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी तो ये एल्गे और फंगाई जो हैं वो वाटर में सनलाइट को जाने से रोक देंगे। So these plants prevents the entering the sunlight into the water, जिसके नतीजे में जो वाटर प्लांट्स हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। So this reduces so this reduces the amount of oxygen in the water
As a result, aquatic life is destroyed. This process is called eutrophication. आप इसमें ये भी कर सकते हैं, वेट करें, रिड्यूसेस नहीं, दो आप ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है ना वो रिड्यूस कर देती है. सो दिस बैक्टीरियल एक्टिविटी reduces the amount of oxygen in water. ऑलराइट, ये यूट्रोफिकेशन हो गया.